Please tell me something that can remove my acne. What do you use for your skin? It's so glowing. How should I choose a skincare product? Will this product work on me? I can go on and on about these kind of questions and they will never end. Today I'm going to tell you sandwich method to solve all your skincare problems. And as always, I'm going to make it so simple for you. So let's not wait more and jump into the video. So what is sandwich method? You might not heard of it. There are mainly 3 steps in a skincare routine. First is cleansing, second is treating, and the third is moisturizing and protecting. So basically all you have to do is pick the ingredient that is for your skincare concern and sandwich it between cleansing and protecting. I'm going to mention some skincare concerns and also the ingredient that can treat that problem. Make sure if you have any of the concerns तो उसके नीचे जो भी ingredient list होगी उसमें से कोई ना कोई ingredient आपकी list में होना चाहिए. Some of the products that are easily available in the market with those ingredients. So I will flash it on the screen and you can take a screenshot every time. First category is acne. Acne is one of the major concerns for so many people. Acne के लिए जो ingredients सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है that is retinoid. Adapalene एक retinoid है जो कि acne को बहुत अच्छे से clean कर सकता है. Some more ingredients to treat your acne is benzoyl peroxide, salicylic acid, azelaic acid and niacinamide. पर्सनली मुझे सिलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एक्ने के लिए. सो दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर एक्ने. इफ यू हैव एक्ने आपको इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट चूज करना है और उसको यूज करना है. इफ यू आर नॉट यूजिंग वन ऑफ दीज then you are not treating your acne. And here are the list of products that are available in the market and also some of them I have personally used. सेकेंड कैटेगरी इज अनइवन टेक्सचर. टेक्सचर होना स्किन पे बहुत नॉर्मल है पर बहुत ज्यादा टेक्सचर होना नॉर्मल नहीं है. जैसे कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड बहुत सारे स्मॉल बम्स होना एंड दैट ब्लैक हेड्स, व्हाइट्स एंड दैट बम्स लीड टू एक्ने. ट्रीटिंग दिस प्रॉब्लम वी हैव केमिकल एक्सफोलिएंट्स इन द मार्केट लाइक पीलिंग सॉल्यूशन, AHA, BHA सॉल्यूशन. You have to use the exfoliants for a long term to see the results. Like 2-3 महीने तक आपको उसे यूज करना हो. बहुत ही हल्की हल्की लेयर जो है वो पील होती है. उसके साथ ही व्हाइट हेड, ब्लैक हेड जो है वो रिमूव हो जाते हैं. There are so many exfoliants available in the market like Pixi Glow, Dermaco peeling solution, Ordinary peeling solution, and here are all the products that can treat this problem. You can choose whatever fits in your budget. So the third category is hyperpigmentation. On Indian skin, having pigmentation is pretty normal. Hyperpigmentation is mainly caused by extreme sun exposure. As we age, it gets worse and also lead to several skin conditions. This is something that I have personally struggled with. I had hyperpigmentation over here. It is fading but still you can see the mark. Ingredients like vitamin C, niacinamides, azelaic acid and hydroquinone treats hyperpigmentation. Also note down that this is a skin concern that take time to improve like 3 to 6 months or even a year to fade away. मुझे भी hyperpigmentation को कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. It is after 2 years of fading. I had like extreme hyperpigmentation. Fourth and the last category is anti-aging. There are 2 ways to treat this problem. First is protecting collagen and the second is building collagen. So main cause of early signs of aging is extreme sun exposure again. So you have to protect your collagen at any cost. आप स्कार्फ पहन के जाइए, आप सनस्क्रीन लगाइए. SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए. आप जितना अपने स्किन को धूप से प्रोटेक्ट करेंगे आपके एजिंग साइंस आने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा. कोलेजन बिल्ड करने के लिए there are some ingredients like vitamin C, niacinamide, retinol and hyaluronic acid preferably. You can use a vitamin C moisturizer if you have hyperpigmentation. You can use hyaluronic acid, ceramides, peptide moisturizer for your anti-aging. We are done with all the categories. I hope all your skin problems are in these categories. So you can figure it out what you need for your skin. Now if you are saying that I have so many problems like I have skin texture, I have hyperpigmentation and I also have acne, then what you can do is you can choose one major problem. For example, you can choose acne first और जब वो improve हो जाए you can go on to your second problem that is uneven texture or maybe hyperpigmentation. Also there are so many products available in the market जो दोनों चीजों के लिए काम करते हैं. Like if you have 2 problems so there are products जिसमें vitamin C भी है, जिसमें niacinamide भी है. So like this you can play smart and you can choose 2 ingredients in one product and you can treat your multiple issues. But I would suggest कि आप पहले एक चीज लें और उस पे काम करें. After choosing the right serum and right moisturizer, right sunscreen for yourself, you have to choose a right cleanser that is according to your skin type. What you have to do is you have to choose 2 cleanser. First oil based होना चाहिए. Second cleanser for remove all the dirt. बहुत सारे product market में available हैं जो कि oil based cleanser हैं. You can choose any of them and that's how you can craft your own perfect skin
care routine and there are some mistakes to avoid. First is don't copy other skincare. जो भी skincare आपको इंटरनेट पे मिल जाता है उसको देख के बस ऐसे ही कुछ भी प्रोडक्ट्स मत खरीद लीजिए. आपको नहीं पता उनके क्या इश्यूज हैं, आपको नहीं पता उनके स्किन कंसर्न्स क्या है, आपको नहीं पता उनके बॉडी प्रॉब्लम्स क्या है. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देयर स्किन केयर रूटीन. Second is don't fall for trendy skincare products. I can't stress this enough. अगर आपके स्किन प्रॉब्लम से वो मैच करता है देन प्लीज बाय, गिव इट अ ट्राई. थर्ड मिस्टेक इज पीपल यूज सो मैनी प्रोडक्ट्स. 2 क्लेंजर यूज करना, सीरम यूज करना, मॉइस्चराइजर यूज करना, एक प्रोटेक्ट करना यानी कि सनस्क्रीन यूज करना. बस ये 4 से 5 प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं और आपको यही यूज करने चाहिए तक आपका वो स्किन कंसर्न्स कम नहीं हो जाते. जो कि सबसे ज्यादा मिस्टेक की जाती है दैट इज कंपेयरिंग योर स्किन केयर जर्नी विद अदर्स. सबकी स्किन केयर जर्नी डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, होते हैं. ऑल्सो जीन्स एंड डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in how your skin looks. So please don't compare your skin with other skin. Every skin is beautiful. And that's it for this video. बाकी सब आपको पता ही है. 4 लीटर पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, जंक अवॉइड करना है एंड दूसरों का स्किन केयर नहीं यूज करना है. And with this, I'm going to end this video. I hope this video helps you in any way. Please subscribe to the channel and hit the notification bell. I will see you soon in the next video. Until then, bye.